गुड मॉर्निंग गाइज। आज है डे 3 और आज मेरा प्लान था कि हम जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, मतलब मैं तो रास्ते में है यहाँ से, जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है हाथी पाँव, जहाँ से इसका ट्रैक शुरू होता है 2 किलोमीटर का। फिर उससे 1 किलोमीटर ऊपर और इज़ द जॉर्ज एवरेस्ट पीक दैट यू कैन गो टू। तो भाई पहुंच गए हम जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। अभी बस कुछ पीने के लिए लिया है, कैश नहीं था बिल्कुल भी और सिग्नल आ नहीं रहे यहाँ पे, तो लेकर आना प्लीज़ अगर आप लोग आओ तो। लेट्स गो। ओके सो आई वुड से कि ये ईजी ट्रैक है, 2 किलोमीटर का है टिल जॉर्ज एवरेस्ट होम। फिर वहाँ से अगर आपको पीक पे जाना है अनदर 1 किलोमीटर, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टीप चढ़ाई। ये मेरा सोलो हाइकिंग एक्सपीरियंस है विच आई एम लविंग, रियली एम्पावरिंग। सो या आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट, not feeling tired a little bit because I'm too motivated to go to the top. Let's meet you there. I think ये रास्ता जाता है पीक के लिए, this one। हो कैंपिंग भी अवेलेबल है यहाँ, nice। That's called Park Cafe. That's the gate. Yes. I'm very excited, honestly. खुशी दिख रही है, चाहे मैं पैंट कर रही हूँ, but I'm super happy, okay? So अब टिकट है apparently, पैसे मेरे पास है नहीं, but let's see. Respect nature, guys. Do not litter. एक ही डस्टबिन दिखा मुझे जब इस गेट से एंटर करा है। 5 more minutes guys, 5 more minutes। ये किस जानवर की है? Tell me in the comments. We are here guys. Do you need to buy tickets to go inside? No. Oh, it's free, huh? Okay. It's free of cost. Thanks. थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। ये काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है गाइज, लाइक उधर जहाँ पे हम पहले थे दैट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर आपको यूजुअली बहुत सारे फूड ट्रक्स मिलते हैं। आज अपेरेंटली बंद हैं सारे फूड ट्रक्स, वॉशरूम्स हैं सी, पर नॉट मच फूड ट्रक्स। थोड़े बहुत ढाबे खुले हुए हैं अभी भी, बट देन दैट्स दैट। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ऐसे ऑफ ट्रेल्स पे जाने में बड़ा मज़ा आता है। वाओ गाइस, टेक अ लुक। It's gorgeous.
देख रहे हो आप, दैट्स द ऑब्जर्वेटरी। पता नहीं वहाँ अलाउड है जाना कि नहीं, वील ट्राई, लेट्स सी। बट बहुत अमेजिंग है। अगर आप मसूरी आते हैं, आई वुड ऑफिशियली रिकमेंड दिस। And you know the best part? There was nobody there on the top. And it was absolutely peaceful. And you actually feel on top of the world here. हाय, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रैक का मेरा बहुत अच्छा था। एक्चुअली 2.5 किलोमीटर का रास्ता है टुगेदर। बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक है ये। रोड बना हुआ है, सिर्फ आई थिंक अराउंड थोड़ा सा ख़राब रास्ता होगा 500 मीटर का, बट बाकी सब सही रास्ता है, तो आपको चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पाथ है वो फॉरेस्ट के बीच में से जाता है, तो थोड़ा कूल हवा चलती रहेगी तो अच्छा लगेगा आपको। एकदम स्क्रॉचिंग धूप में आपको नहीं एक्सपोज हो गया आप बहुत देर तक, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई वुड सजेस्ट कि कम हियर, ऊपर तक आइए, एकदम बहुत ब्यूटीफुल जगह है। थोड़ी देर आप बैठ भी सकते हो एंड जस्ट एन्जॉय दिस ब्रीज। तो वैसे जो ये पीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द जॉर्ज एवरेस्ट पीक। आपको स्टोन्स और रॉक्स पे से क्लाइंब करके जाना पड़ेगा। तो अब वक्त हो गया है हमारे वापस जाने का, सो कम अलोंग। तो कैसा लगा मेरा फर्स्ट एवर सोलो हाइक का एक्सपीरियंस? वेल, आई डेफिनेटली लव्ड इट, बट डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था आपकी फर्स्ट हाइक का, और आप कहाँ गए थे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So मिलते हैं next week. I am Neha, a girl in the midst, signing off. You keep traveling. Ciao.